Good evening, Sanglikas. We are so delighted to have you to this glorious day. We, the Podarites, heartily welcome you. Let's put our hands to welcome our honorable chief guest and guest of honor. Put your hands together to welcome the chief guest and guest of honor. Keep clapping. A very divine, spiritual and pleasant evening to our esteemed chief guest, beloved Principal Sir, Vice Principal Ma'am, invited guests, luminaries on the dais and off the dais, dear parents, all the teaching and non-teaching staff and our amazing friends. Good evening to all. I, Master Avnish Patil, And I, Master Vihan Deshmukh from grade 4th, heartily welcome you to this marvelous function. प्रतिभा की चमक को देखने, प्रतिभा के उत्सव को मनाने, सृजनशीलता और कौशल के प्रदर्शन के लिए आप सभी का पोदार इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सांगली में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. Today we celebrate the culmination of another academic year, a year filled with learning, growth and countless achievements. As we gather here, let us applaud the dedication and perseverance of our students who have strived to excel in all the spheres of their life. This evening will be filled with joyfulness, jubilation and bliss. Light is a symbol of brightness, prosperity and happiness. To make this evening blessed one, let us invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. Now I request all the dignitaries to light the lamp and seek the blessings. Om Asato Ma Sadgamaya. तमसो मा ज्योतिर्गमय. अंधकार से प्रकाश तक, अज्ञान से ज्ञान तक. भारतीय संस्कृति में ओम असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय परंपरा एवं संस्कृति की पहचान दर्शाता है. प्राचीन संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में दीपक को प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार से हमारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो, ये भावना मन में रखकर हम दीप प्रज्वलित करते हैं. I request all the dignitaries to be comfortable. To kick off our event, let's welcome our school choir with a melodious rendition welcome song.
on audience, give them a huge round of applause for this mesmerizing song. Vihan, we always love the first day of school better than the last day of school. Put your hands together to welcome our chief guest. Guest is arrived. It was a team effort and I am proud of what we have accomplished. I request all the dignitaries to come on the stage and be comfortable. जिनके विचारों से जगमगाता है जहां, उनके आगमन से खुशहाली है यहाँ। उनके ज्ञान और अनुभव से हमें प्रेरणा मिलेगी, नई ऊंचाइयों को छूने की शक्ति मिलेगी। नई ऊंचाइयों को छूने की शक्ति मिलेगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ गंधर्व पाटिल को। Good evening, distinguished dignitary on dais and members of the organization. And parents. It is my honor and privilege to introduce our chief guest. Today we have the great honor of having with us a remarkable individual whose work has left an indelible mark, making a positive impact in our community. He is none other than Shri Sunil Mohan Rao Pawar, the Commissioner and Administrator of Sangli, Miras and Kupwar City Municipal Corporation. Sir has completed his Masters in Agriculture. Sir also worked as Chief Officer in District of Sangli, Wardha, Kolhapur, Nagpur, Ahmednagar, Jalgaon and Kalyan. Many more prestigious awards such as second rank in Sant Gharge Baba Swachhata Mission, National Shiromani Award, Best for Best Smart COVID Innovation by Central Government, and Award for Best Work in Maji Vasundhara Abhiyan, and many more great accomplishments. His commitment to excellence coupled with unwavering determination has earned numerous accolades and recognition. Sir's expertise and insights have contributed to overall growth and development of our community. Without further ado, I, Master Gandharva Patil, warmly welcome our esteemed chief guest on 12th annual day of Poda International School, Sangli. Please join me in giving a round of applause to express the gratitude of Sir's presence and immense contribution. We welcome you, sir. Thank you. Thank you, Gandharv. I take this esteemed privilege of welcoming our Honorable Principal Sir to felicitate our Honorable Chief Guest, Mr. Sunil Pawar Sir. I also request, ये लेके जाओ और पढ़. I also request Godha Ladda to present the frame to the chief guest, which is made by her. Now I also request Godha Ladda to present the frame which is made by her for the chief guest. Very good, very good. Very Thank you, ma'am. Thank you, sir. An occasion is elevated when we are honored by presence of our distinguished guest of honor, Colonel S.P. Kulkarni sir. Sir's influence and wisdom enrich this gathering. May I invite Sarup Zada to introduce the guest of honor. Good
evening. I am Master Swaroop Sanjay Jadhav from Grade 4 Diamond, here to introduce our guest of honor. Colonel S.P. Kulkarni sir is an outstanding professional academic administrator of repute with an enviable career in the army. An alumni of Sainik School Satara and National Defence Academy Pune. Sir has served with distinction and excellence in the army for more than 26 years. During his illustrious service, Sir had served in Sikkim, Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Sir had served in Jammu and Kashmir for 10 years. Sir commanded 28th Battalion of the Madras Regiment during the Operation Parakram and on the line of control. Being in the army for 26 years, Sir has proved to be a soldier and a leader with exceptional talent in the battlefield. Sir has been awarded Army Commander's Commendation Card for his outstanding leadership, exceptional devotion to duty in stringent operational conditions on the line of control. Sir was a group commander at NCC at Vadodara, where he commanded more than 33,000 NCC cadets. Sir has a 16 years experience at corporate and has been served with distinguished companies. Presently, Sir is a GM at Podar Education Network located at Kolhapur and is commanding 10 Podar schools. It is our honor and privilege to have you, sir. Thank you. Thank you, Swaroop. I take this esteemed privilege of welcoming Honorable Principal Sir to felicitate the guest of honor, Colonel S.P. Kulkarni sir. Now I also request Nishikala to present the frame to guest of honor which is made by her. Over to Harshada ma'am. Thank you. Thank you, Vihan. I request our principal sir to felicitate the esteemed dignitary. We are privileged to have Principal Swati Kanse ma'am from PIS Kankavli. Ma'am, it's an honor to have you. Thank you, sir, and dignitaries. Everybody has dreams in their lives. Hey Unish, do you have any dream? Yes, even I have a dream to become the best student of PIS Sangli School. Yes Unish, dreams come true only with hard work, devotion and dedication. Yes, you are absolutely right. Along with this, we need to commitment to fulfill our dreams to achieve the excellence. Here comes Pakhi Gidwani and Tanishka Joshi to unveil the great achievements of the responsible Podarites. I also request all the dignitaries to reward the proud Podarites. I request our principal sir to felicitate. Good evening, everyone. I, Tanishka Joshi from grade 5th and I, Pakhi Gidwani from grade 4 are here to share the great achievements of our Poda family members. Teaching is the highest form of research. Teachers are able to create a classroom environment where students feel safe and supported to take risks, learn from their mistakes and nurture the love towards gaining knowledge. I would like to invite our beloved teacher, Miss Janvi Dhire ma'am, who is a true mentor, facilitator and a role model for us.
Ma'am has initiated activities like Penautism, popcorn activity, which has improved reading, enriched vocabulary, and developed the concept with clarity in the primary grades. Hearty congratulations to you, ma'am. Audience, put your hands together to honor our innovative teacher. Thank you, luminaries, for the honor. You are all amazing individuals. You have also shown tremendous academic growth as well as social and emotional growth. Let's applaud the students of grade 5th Pearl for showcasing the best active involvement and presentation in the culminating event, Techomania, where students have presented their excellence in technology. Congratulations to the winners. Thank you, dignitaries. The thematic success is a victory for all of us. Recently, we had the thematic unit, Look Where We Live, for grade 1 and 2 students. The students have presented the best presentation and participation. We are so proud of our students, teachers and their parents who have worked so hard to make this happen. Let's welcome grade 1st Diamond students for their blockbuster performance. Let's welcome grade 2nd Opal students for the exuberant performance. Thank you, dignitaries. Audience, please give them a huge round of applause. Thank you, dignitaries. We are grateful to our support staff for the way they create a welcoming and inclusive environment for all of us. We are grateful to our support staff for the way they create a welcoming and inclusive environment for all of us. They are truly committed to make our school better place for everyone. Please join us to celebrate their achievements. And the Best Support Staff Award goes to Miss Madhuri Chavan Didi. Congratulations, Didi. Thank you, dignitaries. Parents are one of the most important pillars at PIS Sangli. We are so fortunate to have the enthusiastic bunch whose dazzling parents had participated in an online quiz, Krishna Kathaya. Miss Aarti Singh is the luckiest winner. Give her a huge round of applause. Thank you, dignitaries. A teacher shapes the lives of students and she guides us through the... You want the paper? Huh. A teacher shapes the lives of students and she guides us through the darkness with the torch of knowledge she holds. We are really very lucky to have the most erudite teacher here at Podar. One of our teachers who has been the founder member of PIS Sangli, a multifaceted
personality, being a coordinator, social studies facility, and every Poda Right's favorite. A teacher with sheer determination. She has been taking Poda on various heights. We would like to honor with the Lifetime Achievement Award for her unwavering efforts. We are privileged to have you, ma'am. Ladies and gentlemen, it's none other than Miss Jacinta Joseph, Madam. For the honor. Thank you. Thank you, dignitaries, for your honor. May I request you to be comfortable? Whose wisdom and insight have the power to inspire. I invite our esteemed chief guest, Mr. Sunil Pawar sir, to inspire us with the words of wisdom. Namaskar. Good evening to all the dignitaries on the dais, respected principal, and ladies and gentlemen. On this 4th November evening, it gives me immense pleasure to be a part of this cultural evening on occasion of 10th annual program, and I feel greatly honored to be with all of you this Krishna Katha cultural program. I know all the parents sitting over here are eagerly waiting for their children's performance. So I won't take much more time. I just want to thank Golden Heights for the commendable efforts in the field of providing the holistic development of the student. I just saw a documentary and want to appreciate the management and the staff of their diligence in providing the best education to the children in this school. Today I just want to trace one fact that education in present time is a combined effort of school, students and parents. And normally we see the parents of present generation have too much expectations from their children but fail to give that time to them. So the best gift you can give to your child is your time, and this only lead to the flowering of the talent of your children. Moreover, participation in the cultural programs lead to the overall personality development, and there are many values and which we can teach to our children by allowing them to participate in such cultural program. I am very happy to see so many students are participating in today's program. Digitization of education has created pressure on teacher and parents. Information is available, but knowledge is challenged nowadays. We should be able to inculcate values in the children when present education system is creating IITians, doctors, judges, many officers. But are they honest? Are they patriotic? Dedicated towards their nation? So here comes the role of teacher and parents. So above all, we have to create human beings which are full of values and which are full of dedications to the nation. All the education say that every child is unique, so your child is also unique. So we have to think about the development of overall personality, and we should not compare our children with other children. We should be worried about the development of child. I will just say two few things. First, that these wonderful qualities that we saw at beginning of today's program, what is important in 21st century. I always tell teachers, don't teach the children what to think. Teach the children how to think.
because in the world of tomorrow, it is going to be far more important for them to deal with unfamiliar infamy that they could not prepare in advance as we prepare in advance for our school examinations. School examinations are so important. Don't get me wrong. We must do well in them, but there is a bigger examination called life. And that examination asks questions that you cannot study for out of textbook and that might not even be in the teacher's note. So what you need is not well-filled mind showed full of facts and figures, but well-formed mind, and well-formed mind is a mind that related to the problem that a real human being. After leaving school, how do you deal with unfamiliar challenge? How do you deal with problems that you perhaps didn't study because they didn't come in the last year, but come in your real life tomorrow? If you know how to think, you know how to understand the facts and information, synthesize them, simulate them to the heart of what they are about and come up with approach. Then and then only you are going to be able to succeed in the 21st century. Because the space of change is dramatically accelerated with the onset of artificial intelligence, robotics, machine, we are preparing children for a world which will not necessarily resemble the world likely. One thing I just learned from the Oxford Martin School, there is a report, they says that in 2030, the 30% of the job in the world will be jobs that do not exist today. याचा मी फक्त मराठीत अर्थ सांगतो की आता जे जॉब्स आहेत ते 2030 किंवा 2050 पर्यंत ह्यापैकी 30% जॉब्स 2030 किंवा 50ला असणार नाहीत. त्यामुळे आपल्याला इथून पुढे चांगल्या पद्धतीनेच ह्या मुलांना शिकवायला लागले असा त्याचा अर्थ होतो. सो यू कॅनॉट प्रिपेअर चिल्ड्रन फॉर अ जॉब दॅट यू कॅनॉट इमॅजिन बिकॉज इट डझंट एक्झिस्ट. But sometimes between 2020 and 2030, new jobs are going to be created. New functions of expertise will come along. New world is being born that will have to participate in, and that's why it will not be world that is completely covered by everything in their school books. So I repeat, don't teach the child what to think, but teach the child how to think. This is the place where they learn how to human beings, and it is that task that I am so pleased to see being inculcated in the what school showed us in their presentation, because what we saw today was the imparting of values to the children: compassion, gratitude, a sense of responsibility for our society, a sense of care for the environment. These are also important as excellence in school, as important as dancing in this cultural program. So I want to just end my remarks by congratulating the Podar International School for the start they have made in setting the children on the right path, in teaching them both academic excellence, extracurricular activities, and human values and social responsibility, all of which collectively will make them better citizens of our state and country in the year to come. Once again, I want to thank the management for inviting me in this annual day program, Krishna Kathaye. I wish you all the best for your success in the near future. I forgot one thing. I fall in love for the invitation card that management sent me. This is the card with the feather of peacock. First time I saw this type of card prepared by the children. I am very much thankful to this invitation card. Once again, thank you all dignitaries, all parents. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir, for the insightful words. Your illustrious work in a variety of roles for the betterment of society and uplift the underprivileged has made us proud. One of the most revered dignitaries is you. I request Honorable S.P. Kulkarni sir to address the word. Honorable Sunil Pawar sir, dignitaries on the dais, principal sir, staff, parents and my dear students. It's always a pleasure to come and visit this particular school. I'm quite proud of it.
it has got its own stupendous achievements, and I believe that it is not one person's effort, it is the effort of each and everyone who is present here, be it parents, be it teachers, principal, or the students. So it gives me immense pleasure to see the achievements that the school is making year over year, and the way it is growing, the way it is carving a niche for itself. Almost on our fourth year in succession, we are again sending our school children to Model United Nations, Harvard, and that's a stupendous achievement. We must all look up to the people who will bring more laurels to our school once they go there. So all the very best for all of them. And I must say one more thing. Yes, we must teach the children how to think. Yes, I am absolutely in agreement with Sunil sir. But I feel that apart from teaching, this particular school also educates the children in discerning what is right from wrong, what is better, what can be better. So when everybody is in sync, everybody is thinking in synergy, I am very sure this particular school will go to even bigger heights and achieve more laurels. So all the very best to you. Thank you. Thank you, sir, for your motivational words. A visionary leader dedicated to nurturing knowledge, character, and excellence among our students. Sir is a driving force behind our institution's success, committed to shaping a brighter future of our students. Our dedicated, a visionary principal. May I request the great visionary to address the gathering. Good evening to everyone. Honorable Chief Guest Shri Sunil Pawar sir, Honorable Guest of Honor SP Kulkarni sir, my colleagues, principals from PIS Kankavali and Karad, and Vice Principal ma'am. I won't take much time, I know we are running behind the time. But then, as sir rightly brought into the notice that it is a greater responsibility on our shoulder, being the educators and parents, that how we make our children how to think rather than what to think. And as sir rightly brought into the notice that the next 10 years or next 20 years are going to be very different, challenging. But sir, I would like to bring in your notice, you brought into the notice two aspects, that there is involvement of the parents in their children education, and I proudly say that at our school, especially in the primary section, the involvement of the parents is 100% when it comes with their academic, their co-curricular active involvement, and we have been getting greater support. Just to give an example, we conduct a quiz, and yesterday we had sent the Google form, and within 1 hour we had received around 300 responses, and today we have awarded one of the parent who has given the correct answers. So there were many, but we had to pick up the chit. So this is one example which I'm just bringing into the notice. So at our school, it's a triangle which I always say that a parent, students and the school. So let us take it ahead. When it comes with the preparedness, with the 21st century skills, I say that there are 4 C's and 1 C you have been seeing the communication. How best they have been presenting the grade 4 students, the grade 3 students, and then will be one more grade 2 student. So they have been adding a lot of value, they will be. And when it comes with the value, today I think they are going to tell you how the values are nurtured in them through the character of Krishna, whether it is a Bal Krishna or to the incarnation of Lord Vishnu, and they are going to tell how they will also carry those values Lord Krishna has exhibited, made with the dignity of labor, made with the friendship, when it is out of that any feeling when he receives Sudama. So there are a lot of values which they will be talking about, and we will be learning a lot from them. So without taking much time, I would like to request all of you, sit back and enjoy. They have taken a lot of efforts, and all those aspects we have spoken just now will be exhibited here in front of you. Thank you and have a wonderful evening ahead. Thank you
sir, for the inspirational thoughts. Now I invite our little champ, Miss Diti, to instruct us with certain etiquettes to enjoy this glorious evening. Hi everyone, I am Diti Narwade from grade 2. I know you all are very excited to see our performances. But before we begin the show, I have a few requests. Everyone kindly be seated throughout the performances and be restricted from using your mobile phones. Switch off your mobile phones in a silent mode so that the children are not distracted during their performance. The school has arranged for photographs and videos to be taken. So restrict yourself from taking photographs. It would also distract students during their performance. We have made arrangements for a smooth dispersal after the show. So dear parents, please be seated till the show gets over. Please do not be in a hurry to pick up your child in the middle of the show. Announcements will be made for dispersal once the show gets over. I assure you that our teachers are taking good care of your children. So sit back and enjoy the show. Thank you and have a glorious evening for all. Thank you, Diti. They got the moves, they got the attitude, and they have rocked the stage before you. Here comes the amazing troupe of dancers to present the welcome dance. A big shout out for
for the amazing dancers for the best performance. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे अरे विहान, यह तुम कौन सा गीत गा रहे हो? सच्ची मित्रता तथा अपनापन जिसमें है, मैं उसी का गीत गा रहा हूँ। एक दोस्ती की मिसाल हमारी आदि संस्कृति में भी देखने को मिलती है, जिसमें बस मित्रता है। अमीर गरीब छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं। आदि संस्कृति, आप ऐसे कौन से मित्रता से प्रभावित हुए हैं विहान? एक ऐसी मित्रता जिसमें स्वयं एक राजा अपने मित्र जो कि एक आम आदमी है उसकी सेवा करता है, जिसको लेने खुद द्वार पे चला जाता है। दर्शकों में से कोई बता पाएगा कि यह किसकी चर्चा चल रही है? बिल्कुल सही पहचाना, मुरलीधर, नंदलाल, देवकीनंद, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी। तो चलिए उनकी लीलाओं को जानने, इस मधुसूदन की कथाओं का रसपान करें और अपने जीवन को दिव्य प्रकाश से भरने चले हम। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करते हैं। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। भगवान श्री कृष्ण, इन्हें 2 घंटों में समा लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। वैसे तो कृष्ण जी की कई कहानियाँ हैं,
लेकिन उसमें कुछ गिनी चुनी कहानियाँ जो हमारे स्टूडेंट्स निभा पाए हम आज दर्शाने जा रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करें और उन्हें आशीर्वाद दें। हम भगवान श्री कृष्ण से भी क्षमा याचना करते हैं और उन्हें भी बड़े प्यार से आमंत्रित करते हैं कि वो इन बच्चों की मेहनत देखें और उन्हें आशीर्वाद दें। इस प्रोग्राम से किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का या किसी की मान हानि करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। इसमें किसी भी जाति, समुदाय या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का भी हमारा उद्देश्य नहीं है। यह केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। Good evening, ladies and gentlemen, and all the charming and wonderful students. I am Manva, and I am Sara. Today, we will be witnessing one of our favorite mythological characters. Any guesses? He was born in Mathura, raised in Gokul and Vrindavan, and settled in Dwarka. We have learned a lot from his life stories. He is a child to many, a role model to some, and a leader to many of us, and has shown us the way to live one's life with principles and morality. Oh, let me guess. Surely you are talking about Lord Krishna, isn't it? Our Kanhaiya. जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है? Yes, वो कृष्णा है. He needs no introduction. He was the 8th incarnation of Lord Vishnu. He's our Natkat Makhan Chor. Manava, do you know Krishna is known by several different names? Yes, like Kanha, Gopal, Murlidhar, Kanhaiya and Shyam. We have all grown up listening stories about Lord Krishna. There may not be a single aspect of life that is not influenced by his teachings or situations where his stories are not relevant. Yes, a timeless idol indeed. Even in today's Yug, the application of his teachings is just as relevant and universal. Today, we will get to know more about Krishna, his birth, growing up, his playfulness, and spreading happiness and cheerfulness everywhere in Gokul. Today, we will learn more about his ideologies and the lesson that he imparts through his teachings. So let's begin and welcome our students and revisit a great time of Lord Shri Krishna. सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु को धरती पर हो रहे अत्याचार की दशा बताई। सभी ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई कि इन असुरों के अत्याचार को खत्म किया जाए और इस व्यथा का कोई समाधान करे। प्रणाम श्री भगवान विष्णु। प्रणाम ब्रह्मा जी। प्रभु, हम सब आपके शरण आए हैं।
आपकी कृपा हो तो ये धरतीवासियों का उद्धार हो पाएगा। नारायण नारायण। प्रभु, कंस को मिले वरदान की वजह से ही वो सब पर हावी हो रहा है। कंस के सैनिक सारे ऋषि मुनियों को हवन नहीं करने दे रहे। यदि कोई हवन करे तो उन्हें वहां से भगा देते हैं, परेशान करते हैं। प्रभु, अब आप ही कुछ करें, धरती के लोगों का उद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, धरतीवासियों को इस विपदा से अब केवल आप ही बचा सकते हैं। इस दुष्ट कंस ने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। राजा बनने की लालसा में अपने पिता को कारागार में कैदी बना दिया। प्रभु, द्वापर युग आ चुका है, आपके अवतरित होने का समय आ चुका है। प्रभु, प्रभु, यही सही समय है, आप कृपा करें। आप सब चिंतित न हो, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिसके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सबसे बड़ा ज्ञान दूंगा, पर मेरे अगले अवतार का सबसे प्रमुख कारण होगा माँ के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना, थोड़ी शैतानियां करना और फिर उससे माफी मांगना। प्रभु, माँ और संतान के इस अद्भुत रिश्ते को आप किसके साथ अनुभव करना चाहते हैं? कौन है वो भाग्यशाली? वो है यशोदा मैया। प्रभु, कंस अपने बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ करने जा रहा है। नारायण नारायण। प्रभु, यही सही समय है। आप देवकी और वासुदेव से किया हुआ अपना वचन भी निभाइए। तथास्तु मुनिवर, मैं माता देवकी और वासुदेव के यहाँ ही जन्म लूंगा, पर जाऊंगा यशोदा मैया के पास। प्रणाम दाता, नमस्कार करने हुए
बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कितना मंगलमय वातावरण है मथुरा में। क्या किसी का विवाह हो रहा है? हाँ, देवकी और वासुदेव का विवाह हो रहा है। देवकी राजा कंस की इकलौती बहन है, और देखा राजा कंस कितने खुश नजर आ रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रिय बहन देवकी का विवाह यादवों के राजकुमार वासुदेव से हो रहा है। हर तरफ मिठाइयाँ बांटो, रोशनी करो, सारी मथुरा जगमगा उठे, सबको पता चले कि मेरी प्यारी बहन का विवाह है।
वासुदेव और मेरी बहन को यादवों के घर तक मैं ही छोड़ने जाऊंगा। वासुदेव, आप मेरी बहन का ख्याल रखना। अब मेरी बहन आपकी जिम्मेदारी है। अरे ओ महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से ससुराल ले जा रहा है, उसकी संतान ही तेरे अंत का कारण बनने वाली है। तेरा काल तेरे बहन के गर्भ में उसी की 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा। किस बात पर इतना खुश हो रहा है? तेरी मृत्यु का समय आ गया है। तेरे सारे दुष्ट कर्मों का अंत होगा। देवकी, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया, मुझे जाने दो, कृपा करके मुझे छोड़ दो। सुना नहीं तुमने क्या आकाशवाणी हुई? तुम्हारा पुत्र मेरा वध करेगा, मैं तुम्हारा ही अंत कर दूंगा। ना रहोगी तुम, ना होगी तुम्हारी 8वीं संतान। भैया, रक्त के संबंध क्रोध की अग्नि में ना झुलसाए, मुझ पे कृपा करिए भैया। महाराज, अपनी नवविवाहित बहन पर कृपा कीजिए। नहीं, मैं उसका अंत कर दूंगा। महाराज कंस, कृपा कर देवकी को छोड़ दीजिए। आपको हमारी संतान चाहिए ना? मैं मेरे हर एक संतान का जन्म होते ही आपके पास लेकर आऊंगा, पर कृपा करके देवकी को छोड़ दीजिए। मुझ पे विश्वास कीजिए महाराज। मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ठीक है वासुदेव, मैं छोड़ देता हूँ देवकी को, पर तुम भूलना मत, तुमने मुझे वचन दिया है, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बनाया जाए और अपने कारागृह में डाल दिया जाए। क्रूरता से कंस ने अपनी बहन और उसके पति को कारागार में बंदी बनाकर रखा। और इतना ही नहीं,
उनकी हर एक संतान को मार डाला। जैसे ही उनकी संतान होती, कंस कारावास में आकर उन्हें मार डालता। आओ देखते हैं वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान का क्या होता है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, श्री प्रभु ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उस पाप का अंत किया है। जब गोकुल की भूमि पर पापियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण के रूप में खुद त्रिलोकनाथ श्री विष्णु जी ने जन्म लेकर ब्रज भूमि को धन्य किया और शांतिमय वातावरण को स्थापित किया। अचानक पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। बड़ा सुंदर समय था। देवकी के मुख पर एक अलग सी रोशनी छा गई थी। काल कोठरी का सारा अंधकार तेजस्वी प्रकाश से भर गया था। देवकी और वासुदेव के यहाँ भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान को माता देवकी ने अनुरोध किया कि आप एक नन्हे मनुष्य बालक के रूप में आए। माता की बात मानकर भगवान उसी स्वरूप में प्रकट हुए। वासुदेव, तुम शीघ्र ही इस बालक को लेकर गोकुल की ओर चले जाओ। यमुना नदी पार करके गोकुल में नंदराज के यहाँ इस बालक को छोड़ दो। वहाँ माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, उसे तुम वहाँ से यहाँ ले आओ। लेकिन आप कैसे जाएंगे स्वामी? आपके हाथ तो बेड़ियों से बंधे हुए हैं। अगर स्वयं भगवान विष्णु ने ही ये लीला रचाई है, तो अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। अचानक से सारे सिपाही मूर्छित हो गए। वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई। कारावास के द्वार अपने आप खुल गए। सब पर एक माया जाल था। सब मंत्रमुग्ध होकर सो गए थे। कोई जादू सा था हवा में। धड़ाक आ जाओ के सराट पैरों से बीड़ी
गया। बाल कृष्ण बड़े होते गए। उन्होंने सारे गोकुल पर जादू कर रखा था। गोकुलवासी कृष्ण की लीला में मंत्रमुग्ध थे। कृष्ण सबका लाडला था। सारी गोकुल की माताएं अपनी ममता कृष्ण पर लुटा रही थी। गांव के कोने कोने से नंदराज के यहाँ सब कृष्णा के दर्शन और उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। कुछ ऐसा था हमारा कृष्णा। चलो अब हम सब कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं। फल ले लो, वृंदावन के मीठे मीठे फल ले लो। बेटा फल ले लो बेटा, बहुत मीठे फल है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप तो ले लीजिए, बहुत मीठे फल है। प्रभु कोई फल नहीं ले रहा है। सारा गांव घूम के आई पर कोई नहीं फल ले रहा है। क्या आज मुझे भूखा ही रखोगे प्रभु? कृष्ण कृष्ण मुरली कृष्ण कृष्ण मुरली कृष्ण कृष्ण मुरली कृष्ण कृष्ण। अरे ये कैसी आहट है? ये फल मीठे हैं। हाँ बहुत मीठे हैं। तुम लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितना मोल तुम दोगे। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कैसा भोला है रे तू लाला। किसी से कुछ वस्तु लेने के बाद उसे कुछ देना पड़ता है। इसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। तुझे नहीं पता तो अपने मैया से पूछ। मैया? मैया तो यमुना तट पर गई है। अच्छा तो घर में कुछ धान है? बहुत सा है। तो जा थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा मेरे लिए। फल वाली तुम कैसी हो? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। ग्वालन इतना माखन देती है, वो भी कोई मोल नहीं लेती। हाँ केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दो। तुम्हारी भी गोद में मैं बैठता हूँ, तुम्हें भी मैया कह दूंगा। तो फल दोगी? तो कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूँ तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं है कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोद में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? बेटा क्योंकि मैं चंडाल जाति की हूँ। अरे अरे लाला, कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? चंडाली मनुष्य नहीं होते। तू भी तो मेरी मैया जैसी ही लगती है। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लाला। तेरे छूने से तो मैं पावन हो गई। अरे इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कोई क्या देगा। ले ले लाला, ये सारे फल ले ले। तुम चिंता मत करना। हाँ मैं तुझे बहुत सा धान ला के दूंगा। अरे मेरी टोकरी में इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए? ये कैसा चमत्कार हुआ? लाला ने कृपा कर दी मुझ पर। Did you see this? How casually, without thinking about her caste or her status, Krishna called her Maya. This tale shows us how much Lord Krishna respected women and how he treated every woman, even a fruit seller, as his own mother. His respect and honor for women was translated into priceless jewels. These jewels not only represent wealth here, but also show us just how much Krishna values women. Krishna!
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् भगवान आते नहीं हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं हम सखियों के जैसे नचाते नहीं हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शाम सवेरे हो फिर उजाले अंधेरे तू हर पल साथ है मेरे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे तेरा है आँखों में नूर तेरा है ये मन में तू चले है मेरी सांसों में तू ही तू धड़कन में तू ही तू दिल में है मेरे रात दिन शाम सवेरे हो फिर उजाले अंधेरे तू हर पल साथ है मेरे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सांसों में मेरा जहां है तेरी छैया तू है मेरी
जज्बातों में, मेरा जहां है तेरी बैया, तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।